Hello everyone, welcome to ICRA IAS. So today we are going to be covering our weekly current affairs compilation that is from the date 14th of February to 20th of February. The first news we have is about the DRHP, that is the Draft Red Herring Prospectus. The Union government has filed a draft red herring prospectus with the SEBI for selling 5% of its shares in the Life Insurance Corporation, that is LIC. ये जो ड्राफ्ट रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस है ये एक डॉक्यूमेंट है that is being prepared to introduce a new business or product to a potential investor. And this is not a final document for an investor. It is a way of demonstrating value and providing investors with rough information for them to decide whether they want to invest in the company or not. Now, SEBI is required to assess the facts stated in this draft and recommended the changes if required. And before giving the share, this is all going to happen before giving the shares for the sale. You know? The Securities and Exchange Board of India, that is SEBI, is the regulator of the securities and commodity market in India, owned by the Government of India. It was basically established in 1988 and given statutory status through the SEBI Act 1992. SEBI जो है बेसिकली तीन ग्रुप्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इशुअर्स ऑफ द सिक्योरिटीज के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए एंड द मार्केट इंटरमीडिएटरीज के लिए. इसके फंक्शंस क्या होते हैं? ड्राफ्ट्स को रेगुलेट करना, रूल्स को पास करना, ऑर्डर्स को पास करना, इन्वेस्टिगेशंस कंडक्ट कराना और उनको एनफोर्स कराना. व्हाट आर द पावर्स to approve by laws for the security exchanges, to require the security exchange to amend their bylaws, inspect the books of account and call for periodical return from recognized securities exchanges, and inspect the books of accounts of financial intermediaries and registration of brokers and sub-brokers. Riverbed sand mining, जो environment clearance है जो इशू किया गया था to as many as 60 mining areas has paved the way for legal mining of bajri, that is the riverbed sand in Rajasthan. जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इसको बैन करके रखा था, दिस सैंड माइनिंग एक्टिविटीज फॉर 4 years ago in riverbeds until a scientific replenishment study was completed. The apex court later appointed a central empowered committee to look into the issue of illegal sand mining. Recommendations क्या है इसके? Issue environmental clearances to all valid holders of letters of intent as suggested by the expert appraisal committee within 3 months, and do not insist on submission of the scientific replenishment report as a precondition. अभी riverbed sand mining होती क्या है? तो is the extraction of sand mainly through an open pit but sometimes mined from beaches and inland dunes or dredged from ocean and river beds. इसके uses basically they are being used in manufacturing as an abrasive or in concrete. And sand mining helps in extracting rutile, ilmenite and zircon, which contain the industry useful elements titanium and zirconium. अब इसके ill effects क्या क्या है? देखिए sand mining जो है it is direct cause of the erosion and impact of the local wildlife. Various animals depend on sandy beaches for nesting clutches, and mining has led to their near extinction of the gharials in India. Disturbance of underwater or coastal sand causes turbidity in the water, which is harmful for the organisms like coral that needs sunlight. It can also destroy fisheries, financially harming their operators. National Health Authority.
जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा है कि जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है is working to integrate the database of socio-economic caste census 2011 beneficiaries with the National Food Security Act portal so that beneficiaries can seek information regarding their entitlements under this ABPMJ using their action numbers. ये जो स्कीम है आयुष्मान भारत की जो स्कीम है ये अब ये NHA है क्या तो इट इज मैंडेटेड विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द IR ये जो स्कीम थी आयुष्मान भारत वाली और ये जो स्कीम है आयुष्मान भारत ये प्रोवाइड्स हेल्थ इंश्योरेंस अप टू 5 लाख फॉर फैमिली a year for secondary and tertiary care related hospitalizations. NFSA क्या है तो it provides a legal right to a person belonging to eligible households to receive food grains at subsidized price जो कि है चावल 3 रुपए किलो गेहूं 2 रुपए किलो पोस्ट ग्रेन्स जो है वो 1 रुपए किलो अंडर द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसके बेनिफिशियरीज कौन होते हैं तो जो एलिजिबल हाउस होल्ड होते हैं वो 2 कैटेगरी में आते हैं प्रायोरिटी हाउस होल्ड एंड फैमिलीज कवर्ड बाय द अंत्योदय अन्न योजना इसके बेनिफिट्स क्या है तो प्रायोरिटी हाउस होल्ड आर एंटाइटल्ड टू रिसीव 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर पर्सन पर मंथ वेयर एज ये जो अंत्योदय अन्न योजना के हाउस होल्ड हैं दे आर एंटाइटल्ड टू 35 kg per month at the same prices. इसका जो कवरेज है इट कवर्स अराउंड 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन एंड अप टू 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन ये सोशो इकोनॉमिक का सेंसस होता क्या है सो इट इज बेसिकली कलेक्टेड द फर्स्ट फिगर्स ऑन का सबसे पहले देखिए हुआ तो ये था कि 1931 में सबसे पहले ये फिगर्स इकट्ठे किए गए थे और ये जो है कास्ट के इन्यूमरेशन के लिए सबसे लार्जेस्ट एक्सरसाइज तो माना जाता है कि जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है इट सप्लाइज डेटा टू द डिफरेंशिएट द सोशल इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द हाउसहोल्ड बेस्ड ऑन द housing educational status land holding differently abled occupation possession of the assets SC/ST households incomes etc. जो सेंसस है thus provides a portrait of the Indian population ये जो बेसिकली है ये इंडियन पॉपुलेशन का एक पोर्ट्रेट तैयार करके देता है ताकि आगे पॉलिसी मेकिंग में आसानी हो पुलवामा अटैक रिसेंटली अभी 14 तारीख को जो है ये ऑब्जर्व किया गया था एंड प्राइम मिनिस्टर पेड होमेज टू ऑल दोज मार्टर्ड इन पुलवामा ऑन दिस डे इन 2019 एंड रिकॉल्ड देयर आउटस्टैंडिंग सर्विसेज टू आवर नेशन 40 CRPF जवान जो हैं वो एक कॉन्वॉय में ट्रैवल कर रहे थे जैसा कि आप सभी को पता है एंड दे वर किल्ड बाय अ व्हीकल बॉम्ब सुसाइड अटैक ऑन February 14 2019 में इन पुलवामा सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जैश ए मोहम्मद उन्होंने ली थी और इसके डायरेक्ट रिस्पॉन्स में हमारी तरफ से जो बालाकोट एयर स्ट्राइक्स है वो की गई थी तो इट्स जस्ट अबाउट इट ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है ऑपरेशन बंदर क्या था और जितना प्रीलिम्स के लिए थोड़ी बहुत ये वैल्यू एडेड इन्फॉर्मेशन है आप थोड़ा देख सकते हैं इंडिया मालदीव्स डिफेंस रिलेशन why it was in news so India's defense secretary recently visited the Maldives for discussions with the Maldives National Defense Forces as a part of the second defense cooperation dialogue अब डिफेंस कॉपरेशन डायलॉग क्या होता है जो डिफेंस कॉपरेशन डायलॉग है इज वन ऑफ द इंडियाज पॉलिसी लेवल फ्रेमवर्क ठीक है इट एम्स टू स्ट्रेंथन लॉन्ग स्टैंडिंग एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल बायलैटरल defense ties and the first defense cooperation dialogue was held in 2016 and during the presidency of Abdullah Yamin Abdul Gayoom and the second DCD was held in January 2019. The location of Maldives at the intersection of commercial sea lanes running through the Indian Ocean makes it strategically important to India and particularly in the light of China's growing aggression in the region. India-Maldives defense relations. So, since 1988, defense and security have been major areas of cooperation between India and Maldives.
This cooperation extends to assisting the Maldives with defense training and equipment requirements, and India provides the largest number of training opportunities to Maldivian National Defense Force, meeting around 70% of their defense training requirements. Initial public offering IPOs. So ये न्यूज में क्यों है? तो in order to replenish the public money box that has been drained out by COVID-19 pandemic, India is planning one of the biggest IPOs listing ever. 13 फरवरी को ही the state-run life insurance corporation of India, that is LIC, filed its draft red herring prospectus with the capital markets regulator SBI. And according to the filing, the government, which owns 100% stake in the company, is offering 31.62 crore equity shares to a 5% stake in IPO. ये IPO होता क्या है? जो शेयर मार्केट में होंगे या थोड़ा बहुत जो इन्वेस्टिंग करते होंगे या जो थोड़ा सा फाइनेंशियल मार्केट से अवेयर होंगे उन्हें तो पता होगा, बट लेमन लैंग्वेज में अगर हम देखें तो एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है या स्टॉक लॉन्च जो है इज अ पब्लिक ऑफरिंग in which shares of a company are sold to institutional investors and are usually are also retail investors. ठीक है? An IPO is typically underwritten by one or more investment banks and also who also arrange for the shares to be listed on one or more stock exchanges. अब ठीक है, आईपीओ तो निकलते हैं, एलआईसी भी आया है अपना आईपीओ लेके, तो कौन सी कंपनीज जो हैं हु कैन कम आउट विद एन आईपीओ? So in order to protect investors, SEBI has laid down rules that requires companies to meet certain criteria before they can go public to raise the funds. और इन कंडीशंस में एक कंडीशन ये है कि नेट टैंजिबल एसेट्स जो होंगे वो एटलीस्ट 3 करोड़ के होने चाहिए. नेट वर्थ जो है वो 1 करोड़ की होनी चाहिए इन ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फुल ईयर्स. और जो तीसरी चीज होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि मस्ट हैव अ मिनिमम एवरेज प्री टैक्स प्रॉफिट ऑफ 15 करोड़ इन एटलीस्ट 3 ऑफ द immediately preceding 5 years. So, what are the advantages of listing a company? So, it may help a company raise capital, diversify and broaden its shareholder base. Listing provides an access to existing investors of the company. A listed company can raise share capital for growth and expansion in the future through a follow-on public offering or FPO. Satellite broadband services. Digital services company Geo Platforms has formed a joint venture with Luxembourg-based satellite-linked content connectivity solutions provider SES to deliver satellite broadband services across India. ये जो joint venture है will use multi-orbit space networks, that is combination of the geostationary equatorial orbit and MEO, that is the medium earth orbit stations, satellite के जितने भी constellations. The joint venture will be the vehicle for the providing SES satellite data and connectivity services in India, and except for certain international aeronautical and maritime customers who may be served by the SES. और इसकी जो अवेलेबिलिटी होगी it would be up to 100 GPS capacity, है ना? How is Jio's proposed satellite broadband service is different from the Starlink and Orwell services? देखिए जो SES का जो है ये प्राइमरी है सैटेलाइट्स इन द GEO and MEO, that is geostationary equatorial orbit and the medium earth orbit, while those of Elon Musk led Starlink and Bharti Group's OneWeb are in low earth orbit. ठीक है? The altitude of the satellite is directly proportional to the earth, to the area of the earth that it covers. And therefore, the higher a satellite is positioned, the larger an area it covers. What are the advantages and disadvantages of these GEO, MEO, and LEO?
देखिए GEO and LEO satellites जो हैं are considered to be the two extremes in the satellite communications. While GEO satellites provide a larger coverage, therefore only three satellites can cover the whole Earth, and the hundreds of LEO satellites are needed to provide coverage to a larger area. LEO satellites जो हैं वो they are smaller and are cheaper to launch than GEO and MEOs. Scheme for Economic Environment of DNTC, National Commission for Denotified Nomadic Semi-Nomadic Tribes in 2014 under the chairmanship of श्री भीखू रामजी इडाते. ये जो है इसका बैकग्राउंड ये था कि ये जो डीनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हैं दे आर मोस्ट नेग्लेक्टेड, marginalized and economically and socially deprived communities. Okay, and most of them have been living a life of destitution for generations and still continue to do so with an uncertain and gloomy future. Escape the attention of our developmental framework and thus are deprived of the support, unlike SCs and STs. Historically, these जो communities हैं never had access to private land or home ownership. These tribes used forests and grazing lands for their livelihood and residential use and had strong ecological connections. And many of them are dependent upon various types of natural resources and carve out intricate ecological niches for their survival. The changes in ecology and environment seriously affected these people's livelihoods options. अब इस स्कीम के ना चार ऑप्शन है, चार कंपोनेंट्स हैं. पहला ये है टू प्रोवाइड कोचिंग ऑफ गुड क्वालिटी फॉर दीज, ये जितनी भी माइनॉरिटीज हैं जिनको आप कह सकते हैं, जितनी भी ट्राइब्स हैं इनको प्रॉपर कोचिंग of good quality to enable them to appear in competitive exam. एक चीज तो ये है. दूसरी चीज ये है to provide health insurance in communities के लिए. और तीसरी चीज ये है कि facilitate livelihood initiative at community level to build and strengthen small clusters for these community institutions. And the last one is to provide financial assistance for the construction of houses to the members of these communities. Fourth, India Australia Energy Dialogue. इसके डिस्कशन पॉइंट्स ये थे कि जो अभी ऑनगोइंग एनर्जी ट्रांजिशन है, जो एक्टिविटीज चल रही है इन कंट्रीज में ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी एफिशिएंसी, स्टोरेज, ईवीज, इलेक्ट्रिकल मिनरल्स, माइनिंग एक्सेट्रा, ये जो थे ये डिस्कशन पॉइंट्स थे. और एक डिस्कशन पॉइंट ये भी था कि नीड फॉर द क्लाइमेट फाइनेंस वाज आल्सो हाईलाइटेड बाय इंडिया फॉर मीटिंग द एनर्जी ट्रांजिशन गोल्स of developing countries. A letter of intent between India and Australia on new and renewable energy technology was signed during the dialogue. Paved the way for working towards reducing the cost of new and renewable energy technologies, scaling up deployment in order to accelerate global emissions reductions, and focus on this scaling up of manufacture and deployment of ultra low cost solar and clean hydrogen. ये जो other areas जो हैं cooperation के, there is an urgent need to focus on the advancing technology in clean energy transition. देखिए इसमें क्या क्या आता है, इसमें ग्रिड मैनेजमेंट आता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कोलैबोरेशंस आते हैं, वाटर साइकिल का ऑप्टिमाइजेशन आता है, रिन्यूएबल्स इंटीग्रेशंस आते हैं, बैटरीज आती है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आती है. तो ये सब सारी चीजें इसमें आती हैं. सोलर वेस्ट हैंडलिंग पॉलिसी. Why it was a news? So the International Renewable Energy Agency they have estimated that the global photovoltaic waste will touch around 78 million tons by 2050, which is a big number. India is expected to be one of the top 5 generators of such waste. Okay, while India is increasing in solar power capacity, it does not yet have a firm policy on managing waste that results from using the solar panels or from the manufacturing processes. So India currently considers solar waste as a part of the electronic waste and does not account for it separately.
Also, there is no commercial raw material recovery facility for solar e-waste operational in India, and but a pilot facility for solar panel recycling and material recovery had been set up by a private company in Tamil Nadu. सोलर एनर्जी का स्टेटस क्या है इंडिया में? तो इंडिया हैज सेट अ टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 gigawatt of solar energy by 2022, and India's intended nationally determined contributions जो है वो कमिटमेंट जो है इंक्लूड्स 100 gigawatt of solar power out of 175 gigawatt of renewable energy by 2022. और जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है इज द नोडल एजेंसी जो कि इन सब चीजों को टैकल कर रही है। अभी नेशनल सोलर मिशन जो है इट एम्स टू एस्टैब्लिश इंडिया as a global leader in solar energy by creating the policy conditions for its deployment across the country. Rooftop solar scheme to generate solar power by installing solar panels on the roof of the houses. Production linked incentive scheme जो है to promote manufacturing of high efficiency solar PV modules in India, and the International Solar Alliance जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ही लॉन्च की थी और विद द फ्रेंच प्रेसिडेंट इन 2015 with a vision to enable one world, one sun and one grid. ये जो है ये एक फ्रेमवर्क है to facilitate global cooperation, building a global ecosystem of interconnected renewable energy sources that can be smoothly shared. Ayushman Bharat Digital Mission. The National Health Authority has announced the integration of its flagship Ayushman Bharat Digital Mission with the Arogya Setu app, allowing users to create a 14-digit unique Ayushman Bharat health account number from the app. अभी मिशन है क्या? तो इट विल प्रोवाइड अ डिजिटल हेल्थ आईडी, जैसे आपका आधार है उसी तरीके का कुछ, टू पीपल हु विल होल्ड द हेल्थ रिकॉर्ड्स। तो उस हेल्थ आईडी के अंदर ही आपके सारे के सारे हेल्थ रिकॉर्ड्स होने वाले हैं। किसी भी डॉक्टर को अगर आपकी कोई हेल्थ हिस्ट्री या कोई टेस्ट हिस्ट्री या कुछ भी आपकी देखनी हो, आपको वो हर जगह वो आपको पेपर कैरी करने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद वो डॉक्टर अपने सिस्टम में आपका आईडी लॉग इन करेगा एंड ही विल बी एबल टू सी ऑल योर हेल्थ रिकॉर्ड्स। ये इसके फीचर्स में बेसिकली यही है कि एवरी इंडियन सिटीजन विल नाउ हैव यूनिक डिजिटल आईडीज, digitized health records with identifiers for doctors and health facilities. The scheme will come under the Ayushman Bharat प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स होने वाले हैं। हेल्थ आईडी होने वाला है, डिजी डॉक्टर, हेल्थ फैसिलिटी, रजिस्ट्री, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स, ई फार्मेसी एंड टेली मेडिसिन। और जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है हैज बीन गिवन द मैंडेट टू डिजाइन, बिल्ड, रोल आउट एंड इम्प्लीमेंट द मिशन थ्रू आउट द कंट्री। अब इस चीज की जो है जरूरत क्या पड़ती है हमें? तो देखिए ये जो मिशन है इट एम्स टू लिबरेट सिटीजंस फ्रॉम द challenges of finding the right doctors, seeking appointment, payment of the consultation fees, making several rounds of the hospital for the prescription sheets, and among several others, and will empower people to make an informed decision to avail the best possible health care. So ये हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की तरफ एक अच्छा कदम है। So this is all for today. Thank you for watching.